Okay, hi, my name is Gurleen Kaur. I am a creative movement therapy facilitator, a dance educator, and a dancer. And before I start my talking about why I'm here, what is this Kathak in creative movement therapy? I know बहुत लोग सोच रहे होंगे ये क्या है. अभी तक तो कथक सुना था, ये क्या है? ये मैं बताऊंगी आपको. हम लोग थोड़े मूवमेंट्स भी करेंगे, बहुत सिंपल रहेंगे, कुछ खास नहीं, ठीक है? पर उससे पहले आई नो म्यूजिक इतना ज़्यादा नहीं था, पर जब आपने म्यूजिक सुना, सो कुछ चेंजेस थे आपके अंदर, आपने क्या किया? कुछ बॉडी में रिएक्शन थे? डिड यू योर फुट वाज टैपिंग, क्लैपिंग थी? या यस? ओके, दिस लाइट इज ग्लिटरिंग टू मच. थोड़ा सा कैन यू रिड्यूस द लाइट प्लीज? थोड़ा सा लाइट कम करके मुझे दिख रही है. ओके, सो व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंड? Okay, natural response to music. Okay, and anybody else? Wow, that's a really interesting point. ठीक है. So before I come back to this point, this topic, let's talk about इमोशंस. बहुत हैपनिंग टॉपिक है आजकल. सब लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? कुछ भी होता है, मुझे स्ट्रेस हो गया, मुझे एंजाइटी हो गया, मुझे ये हो गया, which is true, it is happening. Mental health concerns are really high right now, okay? And through this session, I will tell you why it is happening, and I'll also give you 2-3 points जो आप हर दिन practice कर सकते हैं. Keep yourself centered and again थोड़ा सा stress, anxiety और pressure regulate और control करने के लिए, ठीक है? So one question, since we talk about emotions क्या होते हैं? Anybody? हाँ, exactly. See, हम लोग सोचते नहीं है ना. What are emotions? Exactly. Okay, what happens when you experience an emotion? I think like the expert answer it. No, but there's no right and wrong. We all are here, we are talking. Okay, this session would be very conversational. मुझे बात करना बहुत पसंद है. Sorry? Okay. And why do you think that happens? Why does body react in a different way? Okay. It needs to express those emotions. Very good. Great. So, I like how she said body reacts in a certain way, right? And not the mind. This is, I think, the first time जब मैंने कभी भी एक क्वेश्चन पूछा है, सबने कहा हाँ हम दिमाग ये होता है, दिमाग में वो होता है. Can we have the next slide? Yeah. So basically, emotions are the reactions that we humans feel in our bodies to a certain event or situation. The type of emotion a person experiences is determined by the circumstance that triggers the emotion. Can we have the next slide? Now, जैसा कि मैंने बोला, हम लोग को बहुत बार लगता है कि हम सिर्फ दिमाग से सोचते हैं, हमें स्ट्रेस यहाँ होता है. ऐसा नहीं होता है. सबसे पहला जो रिसीव करता है स्ट्रेस वो होती है आपकी बॉडी. आपकी बॉडी बताएगी कि ये स्ट्रेसफुल है कि नहीं है. बट इट्स जस्ट दैट हम लोग आजकल इतने अपने माइंड में रहने लगे हैं कि हमने अपनी बॉडी को सुनना बंद कर दिया है. एंड थैंक्स टू सोसाइटीज कंडीशनिंग वी आर like going really backward when it comes to listening to the body. Our ancestors had that wisdom. We don't have it anymore, right? Now, if you look at the second paragraph, the theory proposes that people have a physiological response. Also, that physical changes in the body happens first. So there is a change, there is a response. Response क्या होता है? जब आपको कुछ सुनाई देता है, आप उसको respond करते हो. So there is a shift, there is a change. That's what we call movement. Movement जरूरी नहीं है कि यही है movement. Movement, the way your thinking shifts from one point to another, is also a movement. Can we have the third slide?
Now let's talk about the power of movement. Again मैं क्वेश्चन पूछूंगी. Movement अभी मैंने बताया ये है कि there is a change. So okay, I'll park the question for later this thing. Now movement में क्या होता है? Movement में एक change आता है. For example, मैं यहाँ से यहाँ आ गई, मैंने movement कर दिया, ठीक है? एक simple सा change आया. Can we have the next slide? Movement is the change in the position of a body part. ठीक है? अभी आप लोग ने गाना सुना, आपने movement किया, but at the same time आपका movement अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक लय थी, right? It was just not कि हाँ हम कुछ भी टैप कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, it's fine. No, there was a rhythm to the movement. And why there was a rhythm? Why do we respond to the music in a rhythmic way the moment we hear the music? That happens because हमारी body की एक rhythm होती है. So जब आप music सुनते हो, आपके 5 senses में एक sense ear, basically it takes the sound wave, it translate that sound wave which triggers blood flow limbic system में, आपके brain में एक limbic system होता है जहाँ पे emotions, experiences process होते हैं. So जैसा आप गाना सुनते हो, limbic system में blood flow trigger होता है, वैसा emotion secrete होता है, वो hormone secrete होते हैं, and that in turn creates that emotion, right? Can we have the next slide? Now what is dance? I'm asking very tough questions, ऐसा लग रहा है मुझे. Yes sir. Fine. It's a synchronized motion as per the certain kind of. Okay, thank you. So he said synchronized motion of the body. What is that synchronization? That is your rhythm. Rhythm कुछ भी होता है. Rhythm is basically continuous activities that happen or repetitive movement patterns that happen over a period of time or to a music or to any experience. So yeah, dancers बहुत बार without any music, only with experience, they use that and they just dance. Okay? Can we have the next slide? Now, there are few quotes by different artists who have spoken about dance. So we had musician, we have lyricist, we have novelist, choreographer. And my favorite quote over here is, "Dancing is the hidden language of the soul," by Martha Graham, who is a modern dancer and choreographer. I will talk about why this is my favorite quote, because this is what movement therapy is. We work with your unconscious and conscious mind in a therapeutic framework in a creative movement therapy session. Can we have the next slide, please? So dance is the movement of the body in a rhythmic way. कोई भी rhythm follow करते हैं. आपने बहुत बार सुना होगा, ये मतलब डांसर टर्म है, बट हम ये यूजली भी यूज करते हैं. योर बॉडी इज वेरी आउट ऑफ रिदम, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत अलग तरीके से चल रहे हो. वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है व्हेन यू आर डिस्कनेक्टेड विद योर बॉडी एंड यू आर लिविंग इन योर माइंड. कभी भी आप नोटिस करना, कभी भी आप जब गुस्सा होते हो या एंग्शियस होते हो, आपकी चाल बदल जाती है. कभी नोटिस किया आपने? हाँ, बहुत जल्दी चलने लगते हैं. वो हमारी बॉडी की नेचुरल रिदम नहीं है, पर हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग में इतने होते हैं, हम स्ट्रेस में इतने होते हैं कि हम हड़बड़ी में चलने लगते हैं. ठीक है? So it is usually to music and within a given space for the purpose of expressing an idea or emotion, releasing energy or simply taking delight in the movement itself. So बहुत बार क्या होता है कि अब मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं मैम हम डांस सिखाएंगे इसमें. हम डांस नहीं सिखाते इसमें, क्योंकि जो डांस सिखाना होता है that is art of dance. We are not talking about the professionals. Everybody can dance. We all have rhythm
एज सिंपल एज दैट. मैं ये मान ही नहीं सकती कि आप डांस नहीं कर सकते. आप इसलिए डांस नहीं करते हो क्योंकि आप जजमेंट से डरते हो. यू आर कंपेयरिंग योर डांस विद समबडी हु हैज बीन ट्रेन फॉर 20 years. अरे उसको 20 साल इतना मार मार के ट्रेन किया, वो तो अच्छा करेगा ही ना, राइट? तब भी अच्छा नहीं करता है. बाय द वे, देयर आर लॉट ऑफ डांसर्स who still can't dance even after years of training. And why is that? Why does that happen? वो तो डांस कर रहे हैं ना हम, क्योंकि वो जो डांस है, that is just the art of dance. We are not working with the mind and the soul of the body over there, right? That comes again under profession. Next slide, please. Now dance is therapeutic. So there are a lot of, I was researching कि भैया like इंडिया में इतना नहीं मिला था मुझे, बट ये कोर्स मुझे बाहर से बहुत लोगों के मिले हैं जिन्होंने बात की है कि डांस थेरेप्यूटिक क्यों है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. I love the first quote. The reason why I love to dance is I'm in the middle of the biggest fight of my life. I have stage 4 bone cancer. Dancing is my escape from everything. It inspires me to keep fighting. I hurt a lot, cry, but I can still move. My emotions show. I dance because it keeps the fire in my life. There are so many times I've heard people who've been struggling with life-threatening concerns or disorders, and the moment they come, the moment I play music for them and the way they dance, I don't think so मैंने कोई एक डांसर को भी इतना अच्छा डांस करते हुए नहीं देखा है जितना वो लोग करते हैं. वो इसलिए होते हैं बिकॉज यू आर सो ओवरवेल्म्ड, यू आर सो इन योर बॉडी. बिकॉज आपका जब कोई भी डिसऑर्डर होता है, यू पेन होता है, कंसर्न होता है, यू आर इन योर बॉडी दैट टाइम. सबसे ज्यादा जब फीवर होता है ना, तभी पता चलता है वो ये भी जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये भी जॉइंट है, ये भी मसल है, ये भी पेन हो रहा है. चिकनगुनिया जो आजकल बहुत चल रहा है, जैसे ही चिकनगुनिया होता है सारे मसल, सारे जॉइंट बॉडी के ना सामने आ जाते हैं एक करके. एंड that is nothing, basically you are being present in your body. Next slide please. Now let's talk about dance movement therapy. बहुत सिंपल है, 2 डेफिनेशंस हैं, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, आप पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मना नहीं करूँगी, बट सिंपल सा थिंग, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. We use dance psychotherapeutic aspect of dance एक थेरेपी सेशन में. सो थेरेपी सबको पता है, अगेन बहुत इनवर्ड है आजकल, सब लोग को बोला जाता है अरे यू हैव एंगर इश्यूज, गो टू अ थेरेपी, लाइक गो सी अ थेरेपिस्ट. अब टॉक थेरेपी में क्या होता है, आप बात करते हो, ठीक है, बात कर रहे हो, भड़ास निकाल रहे हो, उसके बाद क्या. आई एम नॉट सेइंग टॉक थेरेपी इज रॉन्ग और टॉक थेरेपी का कोई वैल्यू नहीं है. टॉक थेरेपी इज वैल्यूएबल इन इट्स ओन वे. फॉर एग्जाम्पल, somebody who has clinical depression can't move music पे, उसको टॉक करना पड़ेगा पहले. That person, he or she needs to talk about what is going on in the mind and then be present in the body, right? So talk therapy is also important. तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे माइंड और बॉडी दोनों के साथ बात करते हैं, राइट? हर इंसान की एक यूनिक मूवमेंट वोकैबुलरी होती है. मैं ऐसे बैठती हूँ, बहुत लोग ऐसे बैठेंगे, बहुत लोग ऐसे बैठेंगे, राइट? सो हर इंसान की एक यूनिक मूवमेंट वोकैबुलरी होती है. हम उस यूनिक मूवमेंट वोकैबुलरी के साथ हर काम करते हैं और उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं. अब आप सोचोगे यार ये मूवमेंट पे क्यों करना है इतना, क्या है मूवमेंट? What happens when you move in a different way? कुछ गेस कर सकते हैं? Okay, you create a new neural pathway in your body. How does that help? New neural pathway का मतलब जिंदगी जीने का एक नया नजरिया, मूव करने का एक नया तरीका, काम करने का एक नया तरीका, और एक हेल्दी फिजिकल एंड मेंटल सेल्फ. बेसिकली एक हेल्दी फिजिकल बॉडी एंड मेंटली यू आर फिजिकली फिट. एक न्यूरल पाथवे का इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी बॉडी में. सो दैट्स व्हाई मूवमेंट इज सो इम्पोर्टेंट. इसीलिए आज की डेट में मेंटल हेल्थ कंसर्न्स इसलिए इतने ज़्यादा है बिकॉज वी हैव स्टॉप्ड मूविंग. वी हैव ब्लिंकिट, वी हैव स्विगी, वी हैव जोमेटो, वी हैव उबर,
We don't walk anymore. I have heard, it's very sad to see कि class, मतलब 5th, 6th के बच्चे, they can't squat and sit like this anymore. It's scary. This is a basic natural movement of the body and kids can't do that anymore. Right? Next slide, please. So this is the definition. I'll give you thoda sa time. Just go through these. These have very big words. So Creative Movement Therapy Association of India is the first organization that brought movement therapy to India in 1990 under the guidance of Tripura Kashyap. She was the first lady who learned it in the US and brought it to India. Second, again, one of the authorized organization जो creative movement therapy सिखा रहा है वो है Indian Association of Dance Movement Therapy. Next slide, please. ये मेरी definition है. This is what I feel I have understood about DMT, dance movement therapy या creative movement therapy. You guys can click a picture. आराम से आप बाद में भी पढ़ सकते हो if this interests you. Not a problem. अगर आप देखेंगे लास्ट पैराग्राफ में आई हैव आल्सो मेंशन दिस non-verbal modality not only helps in clinical disorders such as depression, ADHD, dementia, compulsive disorders, etc., but can also be explored for general well-being. For example, stress, emotional regulation. What is emotional regulation? बहुत मुश्किल है आज हम लोग के लिए इमोशनली अपने आप को रेगुलेट करना. कितने लोग होते हैं जब गुस्सा होते हैं and within few seconds they snap out of it and they're like, it's not even important. कितने लोग कर पाते हैं आज की डेट में? Yeah, but it's there in your body. That's what I'm saying. We are living in our mind that we are so disconnected with our body that we don't know how to do it. गुस्सा करने के बाद, बोलने के बाद, चीजें करने के बाद हम लोग को रियलाइज होता है ओहो इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी. हमेशा यही होता है ना, गुस्से के बाद आपको लगेगा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी. But we have forgotten how to emotionally regulate ourselves. So creative movement therapy also helps in emotional regulation, which will help you in day-to-day activities. Of course, range of motion, flexibility, body awareness, etc. Next slide, please. These are basic benefits of DMT. Physical, better range of motion, chronic pain and hypertension management, enhanced cardiovascular health, movement disorder, long-term fitness, mind and body coordination. These are psychological, anxiety, depression, stress management, Parkinson's, dementia, emotional work on self-esteem, body image, emotional attunement, personal space awareness, जो इंडिया में is a challenge. We don't know our personal space. क्योंकि अपनी नहीं पता होती तो इसलिए दूसरे की भी नहीं पता है. रोज मैं जब ड्राइव करती हूँ ना तो मैं ये कहती हूँ पर्सनल स्पेस अवेयरनेस गाइस, पर्सनल स्पेस अवेयरनेस प्लीज. सो वन ऑफ द चैलेंजेस वी फेस इन इंडिया. encourages creativity, mood management, better communication. Social is better communication. We can communicate better if we are emotionally regulated. Don't you think our communication would be better? एक एग्जाम्पल बताती हूँ बेटर कम्युनिकेशन का. मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनका बच्चा था 12 साल का. उनका कंसर्न ये था, उन्होंने मुझसे ये बोला था कि मुझे अपने बच्चे को डांटना बंद करना है. नो प्रॉब्लम. वी वर्कड विद हर 6 months. I think 1.5 months, 2 months after working with her, one fine day I get a call in the middle of the night. उन्होंने मुझे बोला कि गुरलीन, मेरे बच्चे ने मुझे बहुत परेशान किया अभी, एंड मैं उसके ऊपर हाथ उठाने ही जा रही थी, बट आई स्टॉप्ड. I gave it some time. I hugged the child. I said, it's okay, we can deal with this tomorrow morning. Thank you. What happened there? This comes under conflict resolution. Right? Conflict resolution is nothing. When something happens, so the space between something that happens and how you react to it, that space is your conflict resolution. जब आप ठहर के सोचते हो कि ये नहीं करना है, this is wrong, I don't want to do it and I will not do it. So dance movement therapy can also help you with this basic thing as conflict resolution, which helps you in day-to-day like activity.
enhanced bonding, communication skills, mindfulness, increased empathy and sensitivity, which is again it is required in today's world. We are too quick to judge. We are too quick to form, this thing कि हाँ यार ये तो बुरा ही है या ये अच्छा ही है. Decrease in innovation, confidence building, etc. Can you have the next slide, please? Now let's talk about, अब तो ये हो गया creative movement therapy. किसी को questions है आप मुझसे पूछ सकते हैं. You can just interrupt me and you can ask questions before we start this. इसमें मुझे आपकी थोड़ा movement करेंगे इस section में. Any question? Good. Okay. Now what is Kathak? Dance form that originated in North India. Okay. सालों साल लग जाते हैं. भात खंडे में हम जाते हैं, सीखते हैं, डिग्रीज हैं, पर कथक ना डिग्री के लिए बना था ना सीखने के लिए बना था. कथक was originated just to communicate with the God. It was a form of storytelling using the body. They spoke about mythology, they spoke about their culture, they spoke about religion. And in generic storytelling के लिए कथक यूज किया जाता था सालों साल पहले. वही हमने किया है, डांस को आर्ट ऑफ डांस कर दिया है. एक डांस में हम प्रोफेशनल डिग्री लगा दी है, तो अब कोई भी कथक करने से पहले 2 बार सोचेगा, बिकॉज हमें तो कथक आता ही नहीं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Simple Kathak, a classical dance form that originated in North India, embodies rhythmic footwork. Your tatkars, ta thai thai tat, a thai thai tat. ठीक है, सिंपल है. मैं तो कथक डांसर भी नहीं हूँ, मैंने कर लिया, आप भी कर सकते हो. Graceful gestures and storytelling through facial expressions. These elements, when adapted to a therapeutic context, provide a powerful means of self-exploration. अंदर क्या चल रहा है? Emotional processing and healing. हम बात करेंगे इसके बारे में. Next slide, please. And how does that work? Okay, next slide. Now, अभी मैंने ता थई तई तत आ थई तई तत किया, right? So it is. We use again rhythm as regulation. अपनी खुद की body की rhythm we use as a regulation. Now the rhythmic footwork tatkar in Kathak not only trains focus and balance but also aids in emotional regulation. Repetitive patterns help ground participants, offering a sense of stability and structure essential for those managing anxiety or emotional turmoil, which is again most of us. Before we speak about the next point, एक छोटी सी मूवमेंट एक्टिविटी कर सकते हैं. If you guys are okay. उठने की जरूरत नहीं है. अगर आपको बैठ के करना है बैठ के करिए, उठ के करना है उठ के करिए, जैसे मन है वैसे करिए, आपके ऊपर है. आप अगर चाहो आप बैठ के स्टार्ट कर सकते हो. Then if you are comfortable you can stand up. ठीक है? So we have ta, thai, thai, tat. ठीक है? So right is ta, thai, thai, tat. बस left है a, thai, thai, tat. सिंपल. मैं आपके साथ थोड़ा सा करती हूँ. ठीक है? We'll try. So 5, 6, 7. Right, ta, left, thai, right, thai, left, tha. So tha, thai, thai, ta. Okay, let's do this. If you're wearing slippers, I would request you to please remove your footwear. Sorry. हाँ, this is little compulsory. अभी आप ऐसे कथक क्लास में जाओगे टीचर के घर. I'll tell you why I did that. Okay? Ta, thai, thai, tat, a, thai, thai, tat. Okay? ये हम लोग 7 बार रिपीट करते हैं. ठीक है? आप अपने पेस में, अपने टाइम में, अपने कंफर्ट के हिसाब से करिए. यू डोंट हैव टू से इट आउट लाउड. मन में करिए ता थई थई तत, आ थई थई तत.
whenever you're ready. Very good. Very good. You're ready for dancing. Okay. This time, let's close our eyes. Let's close our eyes. And let's do the movement. Same 7 times. Ta, thai, thai, tat, a, thai, thai, tat. Did you notice anything? कुछ डिफरेंस था जब हमने पहले किया था वर्सेस यहाँ से? Yes. More concentration. Great. फील कर रहे थे कि हम जब कर रहे थे चीज को आगे करते थे. Exactly. You were feeling it. It generated a feeling. Why? क्या कर रहे थे? आप पहले भी कर रहे थे, सेकेंड टाइम भी कर रहे थे. क्या हुआ? क्या डिफरेंट था? Yes. I love your team. So, We got hold of the rhythm. how? Okay, got hold of the rhythm. Great. And how did that happen? Exactly. You stop looking at me. That fear of judgment, fear of doing it wrong, निकल गया. Right? See, एक 4 तत्काल में आपकी बॉडी नहीं अभी बैठे भी और है 4 तत्काल में बॉडी में डिफरेंस आपने देखा है. ठीक है ना. दिस टाइम लेट्स ट्राई थोड़ा सा ज्यादा स्पीड के साथ. ठीक है. सो ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत. ओके. वी लाइक वन मोर लेयर टू इट. दिस टाइम जब आप करोगे इसको मूवमेंट को, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल. ट्राई अपने ओन इन योर ओन टाइम. आपको म्यूजिक चाहिए तो कि ये सही है विदाउट म्यूजिक. ग्रेट. इन योर ओन टाइम इनहेल एंड एक्सहेल व्हेन यू डू द नेक्स्ट मूवमेंट. ट्राई. Notice on any focus on any sensation, any emotion that's coming up right now. Okay. Use the energy which is there in the earth to connect with yours. Okay. Now, can you close the eyes and do the same again? Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Okay? Any difference? Anything that you noticed? Yes. सब बोलते सिर्फ इनहेल और एक्सहेल पे ध्यान दीजिए. क्यों? So जब आप कोई काम नया करते हो, ठीक है, मसल को ना ब्रेथ वर्क चाहिए होता है उसको प्रोसेस करने के लिए. इसीलिए जब भी कभी भी कुछ नया होता है, सबसे पहले we try to center ourselves by doing deep inhalation and exhalation. That's like your basic movement your body requires. वो basic movement के चक्कर में उन्होंने वो complicated movement हमारे रुक गए. Please sit down. Thank you. So we use tadkars to bring the participants back into their bodies. So हम लोग again ये बड़ा in topic है grounding. You need to be grounded, guys. Guys, be grounded. क्या होता है grounding? Grounding में कुछ नहीं है. जमीन है, अर्थ है. 1960 से पहले लेदर शूज होते थे, उसके बाद रबर सोल्स आने लग गए. तब से हमारी ग्राउंडिंग चली गई है. लेदर में फिर भी थोड़ी सी ग्राउंडिंग मिलती थी. That is mainly because आपकी बॉडी में थैंक्स टू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूरॉन्स, योर बॉडी हैज इलेक्ट्रिकल चार्ज. ये पता है ना सबको? And your earth has electrical charge. So what happens is when you're too much in your head, which happens with people with chronic stress, anxiety, PTSD, post-traumatic stress disorder,
clinical depression, disassociation. Disassociation is a term which we use for people who are disconnected from the reality, from themselves, from people around them. Right? In disassociation के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है simply use तत्काल, use it, and जितना force आप use कर सकते हैं करिए. Use this every morning. Start with 5 minutes. You can go up to half an hour. I am on Instagram. You can say hi. Let me know if you see any difference in how you approach your day-to-day work, and how do you approach people, and how your thinking change. Grounding is so beneficial कि इंडिया में तो नहीं but वेस्ट में there are scientists who are actually thinking of using grounding to work with cancer patients. Grounding is so important that it can actually heal your pain, inflammation, and yes, they are saying that it can also heal the cancer. So I don't know, I really hope it works, but grounding always work with these things. So if you're in pain, if you have inflammation, please go ahead and ground yourself every day, free of charge. कोई पैसा नहीं, कोई क्लास में पैसा नहीं देना, कुछ नहीं करना. धरती माता है, लीजिए इलेक्ट्रिक दीजिए, और उसके बाद आप डिफरेंस खुद नोटिस करिएगा. ऑफ कोर्स हम लोग ने इतने साल लगाए हैं अपने आप को ऐसा बनाने के लिए. अब आप घर जाके 5 मिनट में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चेंजेस होंगे. इट्स अ प्रैक्टिस, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग. नाउ सेकंड इज बॉडी अवेयरनेस. Kathak's precise hand gestures, mudras, spins, chakras, and postures bring attention to body alignment, movement control, and spatial awareness. Mudras and chakras are the best thing to use when you are working with children as well. Okay? Children with hyperactivity, बहुत गुस्से में रहते हैं, इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं. Fabulous, trick to work with them is work with them using the mudras and the chakras of the Kathak. It also helps in people struggling with Parkinson, Alzheimer, dementia. In therapy, these elements help participant becomes more conscious of their body and its connection to emotional states, fostering a deeper mind-body connection. So, पार्किंसन में मैं जब पार्किंसन ग्रुप के साथ काम कर रही थी, तो उनको ना बहुत प्रॉब्लम होती थी, ट्रेमर्स होते थे, हाथ जैसे हिलते थे या कोई भी बॉडी पार्ट हिलती थी. उनके साथ मैंने मुद्राएं यूज करनी स्टार्ट कर दी. ओवर आई थिंक 2-3 months उनके ट्रेमर्स कम हो गए, उनकी बॉडी और ज्यादा स्टेबल हुई थी. एंड उन्होंने एक डिफरेंस देखा था द वे दे वर अप्रोचिंग द बॉडी. इतना डिफरेंस था कि मैंने मूवमेंट एक्सप्लोरेशन एक्सरसाइज की थी पार्किंसन डिसऑर्डर ग्रुप के साथ, जो चल नहीं सकते थे, जो बोल नहीं सकते थे, जो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते थे. और उन्होंने एक मूवमेंट एक्सप्लोरेशन एक्सरसाइज की थी जिसमें उनको बस मूव करना था म्यूजिक के लिए. सो इट इज दैट पावरफुल. विल ट्राई मुद्रास एक बार, देखते हैं क्या होता है. हाँ बैठे हो, आपको कुछ उठाऊंगी नहीं मैं इस बार आपको, ठीक है. Simple, you can correct me if I'm wrong, yeah, okay, or actually come join me if you can, if you would like to, yeah, help me out with the mudras. Yeah, I know Kathak, the basics of Kathak, but I'm sure she's trained, so she could help me out. I'm a trained ballet dancer and a jazz dancer, contemporary dancer. I also use ballet in therapeutic aspect, but that is different. I'll tell you why we are talking about Kathak today. Yeah, so these basic mudra to start off with. Okay, so can you all do this? Right? Am I right? This. That's it. Now, can you close your eyes and it's just this. Let's close our eyes and see how it feels. How this feels up हमारे thumb पे, fingers, palm, hand, body में कोई sensation, body के अंदर कोई sensation हो रहा है, कोई feeling आ रही है ये मुद्रा करने के बाद.
And whenever you guys are ready, you can open your eyes. What did you feel? How did this feel? कुछ feeling है लगी? हाँ जी please. अच्छा मुझे लगा आपको कोई बात करनी है. हाँ, we can release any emotion. Yeah. Did you feel a little more stabler when you were doing this? Right? Again, ये तो कथक dances करते हैं, हमें क्या जरूरत है? Right? Okay, this. Alapadma, right? Alapadma. What? Use this every day. Kya? Right? All these simple mudras, there are a group of people who can't do it. And for them, learning this is challenging enough, and learning this can actually help them stabilize their body, reduce their tremors, and also communicate. Yeah. Okay, one more we can try. What? Tripataka. Yes. Right. Again, notice how this feels. The third finger, the entire palm, our hand. Anything that you noticed? Any sensation, any emotions? No? Okay. So these are the, thank you. Thank you so much. Thank you. So these are the mudras which are also there in yoga. Remember? Yeah? All these are there in yoga. And why this then? Why mudras? Because our hands and feet have got the maximum number of nerve endings. Right? That's why सबसे ज़्यादा ठंड हाथ और पैर में लगती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा nerve endings वहीं पे होती है. So इससे आप क्या कर रहे हैं? आप basically अपना एक acupressure भी कर रहे हो, because again points पे है these nerve endings. You are helping yourself to calm down, regulate your emotion, bring yourself back to the body. Okay, so next time whenever you are feeling very like okay बहुत कुछ हो रहा है or you need stability, you can also try mudras, basic Kathak mudras. Next topic, next slide, sorry. Now, expressive healing, storytelling and abhinaya, facial expressions. So again, I just said that I'm a trained ballet dancer, but when it comes to working with Indian clients, I prefer Kathak. Why? Because Indians में हम लोग वर्ड से ज़्यादा एक्सप्रेशन यूज करते हैं. चाय पियोगे? ये खाओगे? वहाँ चले? Why? Indians are very expressive. Yeah, we like to express using our emotions. However, Indians have stopped using their faces to express their emotions. And that's why, again, there is a huge rise in mental health issues. We are going against our genes. These facial expressions, these movements are part of our genes because it's been passed to us from generations. So, storytelling in Abhinaya and Kathak offers a medium to externalize inner emotions, process complex feelings, and communicate narratives. In therapy, these expressive tools can help participants tell their own stories, safely explore emotions like anger, grief, or joy, and find catharsis in the movement. I remember I took one session in Bangalore, and these ladies, there were a bunch of ladies, and they were very aware of creative movement therapy, and they knew what I would ask. So I asked them, how are you feeling? And they're like, oh, we are good. I said, okay, good, great. We did basic Abhinaya exercise with them. And after 45 minutes, I'm not proud that that happened, but after 45 minutes, 50% of those ladies, they started crying. They're like, we did not know that we were holding so many emotions within ourselves. It's just when we started expressing these different emotions using our face, that's when we were brought back to our body and we are like, okay, we are
this is something which needs to get released. Do you want to try once? We'll see how different when I ask you how are you feeling using words and how you feeling using Abhinya feels, right? So, basic, if we have to talk about happy, sad, disgust, peace, excited, anger. Okay? Can we repeat it with me? कोई किसी को नहीं देख रहा है, सब अपने अपने में है कि हम अच्छे लगने चाहिए, सब सुंदर लगे, डोंट वरी. ओके, हैप्पी. ओके, सैड. एग्जैजरेट ना थोड़ा सा, लेकिन एग्जैजरेट. और क्लोज योर आईज. सैड. एंगर. Anger. I'm looking at you guys. Nobody's showing anger. So we are struggling to show anger. Interesting. Interesting. Very nice. Guys, give me a topic. और झेलना पड़ेगा मुझे. Disgust. ये बड़ी जल्दी आ गया सबको. वाह 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 जी वाह. Very nice. Peace. Any other emotion that you can think of, which I think I did not cover? Sorry? Okay, excited. Excited भी नहीं आ रहा है. क्यों? Okay. How are you feeling? Don't tell me in the words, but use Abhinya to tell me how you're feeling. I'm looking at you all. इधर से start करते हैं. How are you feeling? So, I said you don't have to use words. You have to tell me using your expression, facial expression. How are you feeling? Words तो चाहिए ही नहीं ना मुझे. मुझे तो आपके facial expressions चाहिए. How are you feeling? How are you feeling? How are you feeling? मुश्किल है ना बताना facial expressions use करके. And imagine, yes. इतना कुछ भूल गए अपनी जिंदगी में. Exactly. Or imagine this was part of our life centuries back. It's part of you. It's part of the genes. It's part of the DNA. Every single day, we are depriving ourselves from something that has been part of us. Right? So next time, I know this will sound very silly. मैं ऐसे silly चीजें करती हूँ. शीशे के सामने बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है ये, by the way. धीरे धीरे शीशे के सामने start using facial expressions to communicate with your own self. Let's start doing that. And again, like I said, I'm on Instagram. Message me how it changed, like what changed in you and how it helped you. Okay, I would love to hear from you guys. If you guys try, please let me know how it helped you, right? So similar thing, storytelling and Abhinya we again use with dementia and Parkinson patients for them to communicate, for them basically to communicate how they are feeling, what's happening in their life, plus also work on the facial muscles, because Parkinson's में सबसे पहले आपका face का movement कम होता है. So अगर अभिनय आपको किसी भी पार्किंसन पेशेंट को जानते हैं, अगर उनका स्टार्ट है, प्लीज टेल देम टू स्टार्ट डूइंग दीज एक्सरसाइजेस. यू कैन एक्चुअली रिवर्स द सिम्पटम. इट इज दैट पावरफुल. योर बॉडी हील्स इटसेल्फ. योर बॉडी डज नॉट नीड एनीथिंग टू हील. यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट इन योर बॉडी एंड लिसन टू योर बॉडी. इट्स दैट पावरफुल. भगवान ने ऐसे भी बना के भेज दिया है. देयर इज अ थॉट प्रोसेस, और बहुत लॉजिकल और बहुत सॉलिड थॉट प्रोसेस है हमारा शरीर बनाने के पीछे. नाउ कल्चरल रेलेवेंस, लाइक आई सेड, जब इंडियन सिनेरियो की बात आती है, क्लाइंट्स की बात आती है, आई यूज कथक बिकॉज इट्स बीन पार्ट ऑफ अस, प्लस वेस्टर्न क्लासिकल डांस फॉर्म विच इज ओनली बैले. उसमें और इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स में ये डिफरेंस है कि वो बहुत बॉडी बेस्ड है,
वो लोग यहाँ से इतना नहीं खेलते हैं जितना यहाँ से। हमारे जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, स्पेशली कथक, उसमें ये भी है, एंड वो कनेक्टेड विद द गॉड भी है. सो द स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट इज ऑल्सो देयर. So you're working on your not only your mind and body, but mind, body, soul. Next slide, please. Next slide. Mindfulness and breath work. Simple. अभी हमने breath work किया था, आपको समझ में आ गया है breath work कितनी important है, mindfulness कितनी important है. Again, very in topic, and we talk about breath control and pacing, which is again an integral to Kathak, enhancing the mindfulness. Okay, so that's it. This is the last topic that I wanted to talk about and cover. Any questions? My time is out, so I'm outside for a bit. You guys can आप लोग आके मुझसे बात कर सकते हैं. And thank you so much for allowing me to work with you, मुझे सुनने के लिए. And I really hope आप कुछ चीजें implement करोगे अपने life में that can help you bring the change. Thank you so much.